अस्सलाम एवरीवन, आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज का जो हमारा फिजियोलॉजी में टॉपिक है वो दो टॉपिक्स कंबाइन होंगी इस वीडियो में। एक हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर और जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो एंटीबॉडीज़ के ऊपर होगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने गाइटन और हाउ की बुक से एक्सप्लेनेशन आपको दी है। ठीक है, चलें जी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये हर तरह के सेल का सेकंड नेम है। फॉर एग्जांपल हमारे रेड ब्लड सेल का सेकंड नेम है एरिथ्रोसाइट्स। इसी तरह प्लेटलेट्स का सेकंड नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स इन सब के ना सेकेंड नेम लाजमी याद करने हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर सेकंड आपने ये याद रखना है कि ये मूवेबल सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जिस भी पार्ट से हमारे जो भी एक्सपोज एरिया होते हैं हमारी बॉडी के, वहाँ से जब भी जर्म सेंटर होते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स उन जर्म्स के पास जाते हैं, उन फॉरेन सब्सटेंसेस के पास जाते हैं और फिर उनके साथ अटैच होकर या उनकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उनको किल करते हैं। ठीक है, तो ये एक मूवेबल सेल्स है। From an inflammatory areas, white blood cells move from blood to move to that area। ठीक है, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है तो वाइट ब्लड सेल्स ब्लड के ज़रिए उस एरिया तक पहुंचेगा और फिर उस इन्फ्लेमेशन एरिया में जो जर्म या जो भी इन्फ्लेमेशन काजिंग एजेंट होगा उसको किल कर देगा, ताकि उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म किया जा सके। They fight with the germs and kill them and make our body protective। ठीक है, now we discuss the formation of white blood cell, that how they are formed। First of all, white blood cells are formed by two ways। ठीक है, in two ways, half of the white blood formed in one method and the half of white blood formed by another method। ठीक है, partially white blood cells are formed in bone marrow। Okay, our body has a bone marrow and it is spongy like structure, and almost all types of cells, for example red blood cells, platelets and white blood cells are mostly formed there। Okay, in childhood, our red blood cells form in our spleen and lymph nodes and various other structures. But in adult, our red blood cells and our white blood cells are found only on bone marrow. So half of our white blood cells form in bone marrow, while the half and the cells which are formed in bone marrow are usually granulocytes and monocytes. Granulocytes are the types of white blood cells which are neutrophils, basophils and eosinophils, while the monocytes are agranulocyte, means they have no grains like structure in their cell. Now, partially white blood cells are formed in our lymph tissues. We have discussed the lymphatic system. In lymphatic system, in lymph tissue, some of the white blood cells are formed there. So the tissue in lymph tissue, lymphocyte cells are formed. Lymphocyte cells mainly are of two types, which can be lymphocyte B cell and lymphocyte C cells. So we can say that neutrophils, eosinophils, basophils and monocytes are mostly formed in our bone marrow, while our lymphocyte T cells and lymphocyte B cells are formed in our lymphoid tissues। ठीक है, now we move on to the next topic, which is transportation of white blood cell, that how they are transported। ठीक है, they are movable cell as we have discussed। They move from blood, they move toward the infected area। Okay, they are freely available and freely move in our blood, so from our circulatory system they move toward that area where inflammation or where an injury occur, and then they move to that area and then they attach to that antigen, and then they kill and destroy that antigen। Okay, now we move on to the further explanation of white blood cell। First of all, we have to discuss our composition of white blood cell। In white blood cell, we have neutrophil, which is 62%, basophil is 0.4%, eosinophils is 2.3%, monocytes is 5.3%, and lymphocytes is 30% of our blood। Okay, white blood cells are 70,000 milliliters per blood, and the platelets number is 300,000। Each microliter of blood contain our platelets। Okay,
Now we discuss further on the characteristics of white blood cells. We have discussed types of white blood cells. We have 6 types of white blood cells which are given below. First of all, we have polymorphonuclear neutrophils, we have polymorphonuclear basophils, we have polymorphonuclear eosinophils. Neutrophils, basophils, and eosinophils are categorized in granulocytes because they have grains-like appearance in their structure. So therefore we can say that neutrophils, basophils and eosinophils have grains in their cells. ठीक है, इनके सेलुलर स्ट्रक्चर में इस तरह का अगर फॉर एग्जांपल सेल है तो इसके अंदर इस तरह के ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह की जब हम किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इन वाइट ब्लड सेल्स इस न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल्स को देखते हैं तो उनके सेल्स के अंदर इस तरह के ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ग्रेनुलर साइट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। Now we move on to the further type, which is monocyte, lymphocytes and the plasma cells. All these 3 cells are agranulocytes because they don't have granular appearance. Their simple cell has dot-like structure. They have no grains in it. It only has its nucleus and its all other cell organelles. It have no grains-like structure in them. So therefore, it is called as agranulocytes. And agranulocytes include our monocytes, lymphocytes, and our plasma cells. Now, why we call neutrophils, eosinophils, and basophils as polymorphonuclear? As the name indicates, poly means many, and morpho means shape, and nuclear means that they have many nucleus in them. They don't have only one nucleus in them, they have many nucleus in them. Nucleus, the number of nucleus can be 2 or greater than the 2, and many thousands can be. So therefore they are called as polymorphonuclear. And polymorphonuclear includes our granular sites. Our granular sites plus monocytes protect our body from the germs. Okay, granular sites include our neutrophils, basophils, and eosinophils, and our monocytes. All these 4 protect our body from germs, while the lymphocytes and the plasma cells are the part of our immune system. Means that we can say that they are the part of our lymphoid system. लिम्फेटिक सिस्टम का ये हमारा पार्ट है। ठीक है, हम इसे लिम्फॉइड सिस्टम भी कह सकते हैं और हम इसे लिम्फेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं। सो लिम्फोसाइट एंड द प्लाज्मा सेल्स बोथ ऑफ देम आर एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स, सो वी कैन से दैट आवर एग्रेनुलोसाइट्स में जो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स हैं दे कंस्टिट्यूट आवर lymphatic system, while the granulocyte means neutrophil, basophil and eosinophils, and the monosaccharide they constitute our which part our they protect our body from germs. Okay, now we move on to the some special types of white blood cell which is present in our body. It is additional plasma cell. Actually it is included into the type of plasma cell. Okay, it is a large number of fragments which are present and are called as megakaryocytes. ठीक है, ये एक्चुअली में ये कोई एक डिफरेंट टर्म नहीं है, ये कोई वाइट ब्लड सेल्स की अलग से कोई टाइप नहीं है। एक्चुअली ये हमारी जो वाइट ब्लड सेल की टाइप है प्लाज्मा सेल, ये इसी के अंदर अगर प्लेटलेट्स की अगर हम लोग कोई लार्ज फ्रेगमेंट्स देख लेते हैं तो उन लार्ज फ्रेगमेंट्स को हम मेगाकैरियोसाइट्स कह देते हैं। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ हैं और ये भी न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर जर्म्स को मारने के लिए अहम अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Now we discuss genesis of white blood cell. Genesis means production, means how white blood cells are formed in our body. First of all, in the book of Guyton, we have discussed 2 types of lineage. First is myelocytic lineage and the other one is lymphocytic lineage.
Myelocytic linkage start with myeloblast. Okay, myelocytic linkage start with myeloblast, and lymphocytic linkage start with lymphoblast. Now you don't have to explain all the things that are written. You just write these points, then you can get the full marks in your paper. First of all, you have to write that granulocytes and monocytes, both of them are formed in our bone marrow, while our lymphocytes and plasma cells, both of them are from our lymphoid tissue. Granulocytes, monocytes are formed in our bone marrow and they temporarily store there also. Okay, and the lymphocytes and our plasma cell, they are formed in our lymphoid tissues and they also temporarily store there. ठीक है, and now we discuss that megakaryocytes are break up into the fragments of platelets. ठीक है, ये क्या है कि प्लेटलेट्स के कुछ फ्रैगमेंट्स अगर ब्रेकअप हो जाए तो उन ब्रेकअप हुए फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं. और आपने याद कर लेना है कि प्लेटलेट्स का सेकेंड नेम हम थ्रोम्बोसाइट भी देते हैं. ओके, now this is all about our white blood cells. We have discussed its lifespan. बाकी लाइफ स्पेन हम लोग कर ही लेते हैं कि हमने कहना है कि लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल, दैट के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका कितना लाइफ स्पेन है, वो कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं. जो हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि 6 टाइप्स हैं तो हर 6 टाइप का जो लाइफ स्पेन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. न्यूट्रोफिल्स जब हमारे ब्लड में रहते हैं तो उनका लाइफ स्पैन कितना हो जाता है, 4 to 8 आवर्स. ओके, लेकिन अगर ये न्यूट्रोफिल्स हमारे क्या हो जाते हैं, टिश्यूज़ में चले जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टिश्यू हमारा डैमेज हो गया है तो ये न्यूट्रोफिल्स हमारी कैपिलरीज से डिफ्यूज़ हो गया हमारे जो टिश्यूज़ की स्पेसिस हैं वहाँ पर चले जाएंगे ताकि उस डैमेज को रिपेयर किया जा सके और उस डैमेज के ज़रिए जो जर्म या कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर एंटर हुआ तो उसको किल किया जा सके. तो टिश्यू में ये कितना रहते हैं, ये 4 to 5 आवर्स सिर्फ रह सकते हैं, इसके बाद ये डेड हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं. लिम्फोसाइट्स, इनमें इनके जो लाइफ स्पेन है वो बॉडी नीड पे डिपेंड करता है कि बॉडी की नीड कितनी है. अगर बॉडी को बी सेल्स या टी सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो लिम्फोसाइट, टी सेल्स एंड बी सेल्स मोर रैपिडली प्रोड्यूस होंगे. अगर बॉडी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है तो वो कम प्रोड्यूस होंगे. तो वो बॉडी की नीड पे डिपेंड करता है. अब जो एक अलग टाइप है वो है मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी शॉर्ट होता है. ठीक है, और क्योंकि जल्दी ही किल मतलब ये जब किसी फॉरेन सब्सटेंसेस को किल करने लगते हैं तो ये ख़ुद भी इतनी ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते, तो जर्म को मारने के साथ साथ ये ख़ुद भी मर जाते हैं. और हमने देखा कि फिर हमारे बाउंडेड एरिया की जगह पर पस क्रिएट होता है. तो वो पस क्या होता है कि वो एक तो किल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म भी साथ होता है और साथ उसमें डेड वाइट ब्लड सेल्स भी शामिल होते हैं, क्योंकि मोनोसाइट ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहते, वो जर्म को मारने के साथ साथ खुद भी मर जाते हैं. और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 20 आवर्स होता है इन आवर बॉडी. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स थे वाइट ब्लड सेल्स के और उनका लाइफ स्पैन हमने यहाँ पर डिस्कस किया. आगे हमने एक्शन पढ़ना है हमारा न्यूट्रोफिल्स और उसका मोनोसाइट्स का एक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर. ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यूनिटी के ऊपर. ठीक है, सबसे पहले हमने वी हैव टू डिफाइन इम्यूनिटी दैट आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी हैज़ complex system and human body has ability to resist all the toxins and all the microorganisms including bacteria, including viruses, including fungi, and that turns to damage our body cells, our body tissues, our body organs. So this is the special blessing of our Almighty, that He has given us ability to fight from these dangerous microorganisms, and He has given us ability so that we can protect our body.
So it is great blessing. Now we have to divide the immunity in two types. First of all, we have innate immunity and then we have acquired, या हम इसे कह सकते हैं adaptive immunity. First of all, we have to define acquired and adaptive immunity. Innate immunity में क्या कहा जाता है? Innate immunity means that the immunity in the immune system that is present outside of our body. For example, first of all the microorganisms which enter our body, all these microorganisms is present in our environment. First of all, these microorganisms first of all attack on our skin, ठीक है, or attack on the exposed part of our skin. So first of all, these microorganisms attack on our skin. Our skin act as a barrier. Our skin don't allow these microorganisms to enter in our body. It act as a barrier. It don't allow these it recognize that this substance is harmful for our body, so therefore it act as barrier. But sometimes it allow and the passage of microorganisms, so therefore this microorganism enter our body. Then our second line of defense activate. And what is the second line of defense? Our skin act as a first line of defense. Our second line of defense include our neutrophils and our monocytes, ठीक है. Our neutrophils and our monocytes, these cells gradually transported at that side, and then they combine with that antigen which enter our body, and then they kill it. For example, if we suppose that some very strong kind of microorganism enter our body and our neutrophils and our monocytes are unable to destroy that microorganism, then this microorganism enter in our third line of defense. Our third line of defense include our lymphatic system. Our lymphatic system include our T cells and beta cells. Beta cells rapidly recognize that this substance is unfavorable, is not is harmful for our body, so therefore beta cells rapidly produce antibodies, and these antibodies from blood transported to that area, and then these beta cells combine with that microorganism and kill it. For example, if this microorganism is recognized similarly as by T cells, our T cells activates and then they produce our plasma cell, our plasma massive cells, and these cells attack on these microorganism and then they kill it. So in this way our this microorganism is attacked and it is completely destroyed. Okay. Now our acquired and adaptive immunity. What is mean by it? Our acquired and adaptive immunity means that human body has ability to develop extremely powerful immune system against the bacteria and viruses. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि एक जरासीम जो इन्वायरमेंट के बाहर था वो हमारे जिस्म के अंदर आ चुका है. अब जब वो आ चुका है तो हमारी बॉडी क्या होगा, मतलब एक जर्म हमारे जिस्म के अंदर आ चुका है, उसने हमारे किसी एक ऑर्गन को ख़राब कर दिया. अब किसी एक ऑर्गन के ख़राब होने की वजह से हमारी बॉडी डिजीज़ हो जाएगी, हमें बुखार हो जाएगा, हमें कोई भी डिज़ीज़ के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, हमारी बॉडी डिज़ीज़ कंडीशन में चली जाएगी. लेकिन हमारी बॉडी के डिफरेंट होम्योस्टेसिस के कंपनसेशन के ज़रिए हमारी बॉडी में फिर भी बैलेंस मेंटेन रहेगा. ठीक है, डिजीज़ होगी लेकिन बैलेंस हमारा बॉडी फिर भी मेंटेन रखेगी डिफरेंट कंपनसेशन की वजह से. अब क्या होगा कि हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी में एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है. मीन अगर हमारी बॉडी डिजीज़ हो गई है तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन उस प्रोसेस को हील कर सकते हैं, हम उस जर्म को मार सकते हैं ताकि हमारी बॉडी उस डिजीज़ से मतलब पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हो सके. तो इस तरह की जो इम्यूनिटी है जिसमें बॉडी खुद को जर्म से प्रोटेक्ट करती है, जर्म को किल करती है डिजीज़ हो जाने के बाद, उस टाइप की इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. ठीक है.
अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, इम्यूनिटाइजेशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है डेट प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट टॉक्सिन एंड माइक्रोइज्म। ओके, इम्यूनिटाइजेशन में हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ऑल दीज टाइप ऑफ डिफेंसेस आर इंक्लूडेड इन आवर इम्यूनिटाइजेशन. Now we discuss the acquired immunity types. That we have two types of acquired immunity. First of all, we have humoral immunity, and then we have cell mediated immunity. Humoral immunity can also be called as beta cells immunity. Okay, you can call it as beta cells immunity. Okay, so in this type of immunity we make beta cells, and then these beta cells make antibodies, and then these antibodies kill our microorganism which enter in our body. And the cell mediated system, we have lymphoid T cell. These lymphoid T cells activates, and then they kill the microorganism which enter in our body. Okay, then we move on to the next page. Yes, we have that both type of acquired immunity are initiated by antigen. What is mean by antigen? We have definition of antigen, that substance that activate and antibodies production. Means that antigen is any kind of agent that enter our body as a germ, as a foreign substances. First of all, our body has a responsibility to recognize that substance. First of all, our body has special proteins, special types of proteins, special type of enzymes which recognize that this substance is harmful for our body or this substance is not harmful for our body. So first of all, our body recognize that this substance is harmful for our body. Then our body activate. Then this antigen activates our body that something wrong. Then our beta cells produce antibodies against that antigen. And remember that स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन के लिए स्पेशल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी. इट डजेंट मीन कि किसी भी एंटीजन के लिए किसी भी तरह की एंटीबॉडीज़ जाके अटैक करेंगी और वो एंटीजन मर जाएगा, ऐसा नहीं होता. पहले हमारी बॉडी उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करेगी और फिर हमारी बॉडी उसी एंटीजन के मुताबिक ही उसी की तरह की ही एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी जो सिर्फ उसी एंटीजन को मार सकेगी. हम ये नहीं कह सकते कि फिर वही एंटीबॉडी उसी किसी और एंटीजन को ख़त्म कर सके. नहीं, जो एंटीजन गुजरा है एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ आएगी. फिर हमारी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं, वो उन एंटीबॉडीज़ को जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उनको स्टोर कर लेता है. वो स्टोर करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी दोबारा वो एंटीजन हमारी बॉडी में, वही एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वही एंटीबॉडीज़ जो पहले से हमारे पास एक्स्ट्रा बची हुई हैं, जो मेमोरी सेल्स के अंदर बची हुई हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ इमीडिएटली रिलीज़ होंगी एंड देन दे अटैक ऑन दिस एंटीजन एंड देन दे किल इट. ठीक है, तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स हो जाता है कि हमारे बॉडी में जैसे ही इमीडिएट तौर पे वो एंटीजन एंटर हुआ है तो इमीडिएटली जो ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ हैं दैट दे रेपिडली अटैक ऑन दैट एंटीजन एंड रेपिडली किल इट सो दैट आवर बॉडी स्टेबल दिस सिस्टम. ठीक है, अब मैकेनिज़्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन एंटर आवर बॉडी रिकॉग्नाइज इट एंड देन द बीटा एंड टी सेल एक्टिवेट. ठीक है, एंटीजन हमेशा हमारी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है कि भाई तैयार हो जाओ कि कुछ समथिंग रॉन्ग, एंड देन आवर बॉडी एक्टिवेट्स. ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट एंड देन दिस एंटीबॉडीज़ अटैक ऑन दैट एंटीजन एंड दिस एंटीजन विल बी किल्ड. So this is the whole mechanism that how our body protect ourselves. Now we move on to the next topic, which is antibodies. Okay, what is antibody? That we say that antibodies produce and then they kill antigen. How it is possible that how antigen kill that antibodies kill that antigen? So we have discussed there. First of all, we have defined antibodies, that antibodies are the protein attack or eliminated bacteria or viruses as foreign substances. ठीक है, एंटीबॉडीज़ इज़ प्रोटीन इन नेचर. ओके, एंड देन क्या करते हैं कि ये अटैक करते हैं और एलिमिनेट करते हैं किसी भी एंटीजन को जो हमारी बॉडी में एंटर होता है. वो एंटीजन कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है, या कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है.
ठीक है। एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होगा, और एंटीबॉडीज़ के लिए भी स्पेसिफिक है कि वो उस हार्मफुल एंटीजन को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोड्यूस होती है। अब अक्रंस क्या है कि कहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ हैं और कैसे ये प्रोड्यूस होंगी, कि ये दे आर प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स, ठीक है। ओनली बीटा सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करेंगी। इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में ही हमारे बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और देन दिस बीटा सेल्स मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन. Now we have a mechanism of antibodies production, that how these antibodies produce. First of all, we have a beta cell. This beta cell undergo a process of differentiation. Differentiation means a cell differentiate to get specific function. For example, this cell differentiate into different types of cell, and each cell perform different types of structure. So this is called a differentiation. So beta cells differentiate to form plasma cells, and then these plasma cells converted into various form of antibodies. These are the antibodies which are shown by different colors. And then, for example, this is the antigen that enter our body, and it is also called as target cells. So first of all, these antibodies which are already present or produced by the beta cells in our blood, then these antibodies from blood transported to that area where the antigen is present, and then this antibody will attack on the surface of the antigen, and then they form antibodies complex, and then they destroy that target cells and make our body protected. ठीक है. Then we have discussed formation of antigen and antibodies complex, that how this antigen and antibodies complex is formed. That antibodies produced from beta cells transfer to the blood and then to the antigen. Okay, antibodies attach to the antigen to form antigen and antibodies complex. Then the antigen destroy and the foreign substance destroy. This is the structure of antibody that we have. This outer chain is the light chain and the inner chain is the heavy chain. This group and this group is the variable region, while this group is the constant region. It remains same in all types of cell. Only variable region chain in different types of the antibodies. Now we have to discuss different types of the antibodies. We have 5 types of antibodies. We have IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Okay. First of all, we have to discuss IgG. It is the main type of antibody which is present in our blood, and it is a bivalent antibody which present throughout our blood, and it is important to bind with pathogens, and it play important role in our defensive system. Okay. Now we have specific role of IgG, that it is only isotope that can pass through the placenta, means that they transfer from mother to the newborn baby. Okay. So why they are important? Because they are the main play important role in our defensive system. So we say that new baby bones have a very weak immune system in them, so therefore it is very essential for them to have some immune system. So therefore from mother, IgG types of antibodies transfer into the new baby born, so that they have some kind of immune system, so that they can protect themselves from various germs that could attack on them. So therefore the antibody from mother body to the new baby born protect them. This is the structure of IgG. Okay, we have a different group here and different group there, and this is the same group. मैं एक लाइन से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको. ये एक अलग ग्रुप है, ये वाला और ये वाला अलग ग्रुप है, ये और ये वाला ग्रुप है, और फिर उसके बाद ये वाला ग्रुप. तो इस तरह की ग्रुपिंग हुई है इस एंटीबॉडीज़ की टाइप्स में. Then we have second type of antibodies, that is IgM. It is consist of 5 unit base biostructure mainly distributed in blood, play important role in immune system. How this is 5 unit base shape? Because it has pyrrole ring like structure in which antibodies are attached in a pyrrole 5 member ring system.
So therefore it has Y-shaped structure and it is 5-unit basic structure. So therefore it is called as IgM. IgA is mainly present as a monomer, but it can be present in the form of dimer, but mostly it is present in the form of monomers. Present in the breast milk, it protects the GIT of the newborn. Okay. So the next part is the structure of IgA. I say that these are present, can be in the form of dimer. So it is a dimer. This is our first antibody, and this is the second antibody which is attached to the first antibody in the inverted shape. So this is the dimer in which two antibodies combine together. So this is the dimer of what? This is dimer of IgA. ठीक है, and it protect the GIT tract of our new baby bones. Now we have another type which is IgD, and it is present on the surface of beta cells, and it play important role in the production of antibodies, and it prevent respiratory tract infections, and its structure is given below. Now we have IgE. It is originally related to the immune system or by parasite, and it involved in the allergic reaction जैसे क्या है polynosics, and this is the structure of IgE. None of the difference, but the difference is here an extra ring has attached to it. ठीक है. Then we have population, that how many types of antibodies and how the percentage of these types of antibodies present in our blood. First of all, IgG is mostly abundant antibody, which is 75% of our blood. Then because it has major role in the immune system, and it grows through placenta, means that they cross from mother body to the new baby bones. Now the IgM, what is their role? That they play important role in the our immune system, and they have also mainly distributed in blood, and they have 5-unit basic system. And IgA is occur as dimer, and they have a role in breast milk. They protect GIT tract of new baby bones. And the IgD, it has prevent only respiratory tract. So we have right there. First of all, it is goes through the placenta, and the M has 5-unit base. ठीक है. IgA play important role in the GIT tract of the new baby bones. Okay, and IgD prevent respiratory infections. Means that if a respiratory infection occur in our body, then the IgD antibody is activated, and then it attack on that area, and this is active to the response of parasite. For example, if a parasite act on our body, then this antibody activated, and it also allergic, mean if a body is sensitive to allergic, then IgE antibody produce, and it help in the prevention of that allergy. So you have noticed that we use the word Ig with all types of antibody. What is mean by Ig? Ig represent our immunoglobulin. It is a protein which is present in our blood. So therefore Ig represent immunoglobulin, while the letters which are added after Ig जैसे कि GMADE, these represent various classes of antibodies, and this is divided. We have seen major IgG is present, which is 75, the only isotope that can cross through placenta from mother to the new baby bone. Then we have another type which is IgM. They are 10%, and they have 5-unit base. Then we have IgA. They prevent the infection of a GIT tract of the new baby bones, and they are also present in the breast milk. Okay.
Then we have IgD, we have 0.5% or less. It prevents respiratory infections. And then we have IgE, and it prevents parasitic and allergic reaction that can occur in our body. That's all about today's lecture. I hope that you will like it. Please like, share and subscribe this video. Stay tuned. Allah Hafiz.